आज नाज़रीन हम लोग आए हैं तहसीन असलम के दफ्तर एबेकस विल्स एंड प्रोबेट, और यहाँ हम लोग तहसीन का दफ्तर भी देखा, तहसीन की टीम के साथ भी बात करी। अब हम लोग तहसीन के साथ भी बात करते हैं। तहसीन, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लंच खिलाया बाय द वे। थैंक यू। बहुत ही आला। आप आए तो आपको लंच तो खिलाना है ना, आपका टीम साथ आए हैं माशाल्लाह। जी जी, और टीम ने और हमने बड़ा एंजॉय किया लंच को, और थैंक यू सो मच। अच्छा तहसीन, मैं व्हाट आई वांटेड टू डू वाज आई वांटेड टू गेट अ I want to ask you questions that nobody's ever asked you. Of course we're going to talk about wills, of course we're going to talk about abacus, of course we're going to, but I want to know the background, आपका background. वो बड़ा important, वो किसी को भी नहीं पता। और खुफिया बैकग्राउंड नहीं कि किस तरह आपने, कब आई आप इस मुल्क में, योर forefathers, कि किस तरह आपको, एंड वी वांट टू गेज कि आपकी कहाँ मोटिवेशन शुरू। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि when did you come into England, when did you arrive? I was 4 years old. अच्छा राइट, ओके। माँ बाप के साथ, डैडी मेरे पहले आ चुके थे 2 साल पहले, तो फिर जब डैडी सेटल हो गए तो फिर मदर के साथ मेरा छोटा भाई है, एक मुझसे 2 साल छोटा है, तो हम दोनों मम्मी के साथ फिर आए थे। अच्छा, so it's तो just, फिर यहीं पे सेटल हो के डैडी के साथ। so it's just yourself and your brother? माय ब्रदर। Right. नहीं, अब उस वक्त, अच्छा उस वक्त, उसके बाद फिर और उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर माँ बाप के माशाल्लाह और बच्चे हुए, 3 बेटियाँ और एक और भाई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके। और हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह। जी। अच्छा तो पाकिस्तान में आप 4 साल की उम्र तक थी, तो where were you in Pakistan? सियालकोट, आई वाज बोर्न इन सियालकोट। अच्छा, सियालकोट is predominantly a business community anyway, isn't जी it? जी जी जी। अच्छा, was your father also a businessman? इन पाकिस्तान नहीं, डैडी उस वक्त यंग थे, डैडी वाज इन हिज मिड 20s, अर्ली 20s। तो डैडी ने मेरा ख्याल है अपना बीए पास करने के बाद वो अकाउंटेंसी में चले गए थे, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर यहाँ आ गए थे। अच्छा, so he was a young man, Very married young with 2 man, kids, yes, and he came to England. yes. वैसे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या पीछे से, मतलब वो कहते हैं ना कि जी, did you... मेरे 4 फादर्स, डैडी मेरे दादा जो थे अल्लाह बख्शे, और दादी, वो लोग श्रीनगर से थे, इंडिया से। राइट, ओके। माइग्रेट होकर आए थे। माइग्रेट होके वो सियालकोट चले गए, राइट। एंड योर दादा वाज ही अ बिजनेसमैन? मैं एक्चुअली द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दीस क्वेश्चंस, मैं ये सोच रहा हूँ आपका ये बिजनेस हेड कहाँ से आया है? जी। बिकॉज इट यूजुअली इज अ हेरिडिटरी थिंग। आपने देखा होगा जिस तरह डॉक्टर के बच्चे जो होते हैं 99% ऑफ द टाइम्स आर डॉक्टर्स, एग्जैक्टली, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन होते हैं। तो आपका ये जो ट्रेंड है, बिकॉज यू नो आई एम सर्टेनली गोना टॉक टू यू इन रिगार्ड्स टू where you are in England as well, in regards to the Pakistani community, but कहाँ से, क्या दादा क्या करते थे? मेरे दादा तो आर्मी में थे, इंडिया पार्टीशन से पहले इंडियन आर्मी में थे। तो फिर जब ऑब्वियसली जब पार्टीशन हुआ तो सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो उनका बस यहाँ तक ही था आर्मी में। फिर डैडी ने, हमारे दादाजी, उनको हम अब्बा जी कहते थे, तो उन्होंने उसके बाद कोई ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो माशाल्लाह उनके 2 बेटे थे, मेरे चचा भी थे, तो वो सपोर्ट करते थे हमारे। Right, okay. So then your father came to England, to the UK. Came to the UK, and he was he working here or was it? जी, इनिशियली तो उस दौर में अली जो लोग आए थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ जब कंट्री रीबिल्ड हो रही थी इधर, तो बहुत से लोगों को यूके के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंडिया से जाके, पाकिस्तान से जाके रिक्रूट किया, वर्कफोर्स रिक्रूट किया। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ थीं, यहाँ पे मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल्स थे, तो उनको वर्कर्स चाहिए थे टू रीबिल्ड द कंट्री आफ्टर द वॉर। तो जब आए थे डैडी मेरे इधर, तो वो फैक्ट्री में काम करते थे। Right, okay, बहुत साल okay. उन्होंने फैक्ट्री में, pretty much in all the the Midlands, Pakistanis that जी, actually came over, पाकिस्तानीज, and Indians and जी, what, जो भी सारी आए थे, nationalities, जी। जी जी। मगर हमारी कम्युनिटी का ये खासियत है कि we are survivors. Oh yes, absolutely. We are survivors and dreamers, and because we are survivors as well, we can make our dreams come true.
हम बहुत वर्सटाइल लोग हैं। तो मेरे डैडी ने काफ़ी साल काम किया, उन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम किया, फिर उन्होंने एक घर लिया जो साथ शॉप थी। हमारी कम्युनिटी में बहुत सी कॉर्नर शॉप्स, अच्छा, राइट, ओके, कॉर्नर लिटरली कॉर्नर पे थी वो। पीछे घर था हमारा जहाँ हम रहते थे, और कोने पे शॉप थी, ग्रोसरी शॉप। तो डैडी साथ काम भी करते थे फैक्ट्री में, और मम्मी भी साथ चलाते थे। और हम लोग जब स्कूल से और साथ आप वापस लोग कॉर्नर शॉप भी चला रहे हैं? अच्छा, so the business acumen or that actually came from your father. I was trying to analyze कि ये to actually, I mean very very frankly, to be ये आपका, बल्कि यहाँ पर मैगजीन के अंदर है भी, ये ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ पावर 100 के अंदर भी आप featured हैं. So that's one of the reasons why I was thinking कि ये कहाँ से ये जो entrepreneurial आपकी वो skill set है, ये कहाँ से आई है? तो डैडी को भी हमेशा शौक था कि बिजनेस करें हम, क्योंकि बिजनेस में स्टेटस होता है, बिजनेस में जाहिर है कि इनकम भी आपकी ज़्यादा होती है। And then you're responsible for your own income. Absolutely. So हम भी बचपन से टीनेजर्स थे तो हम भी शॉप में हेल्प करते थे। जब वो बेल होता था, कोई शॉप में आता था, तो जो भी फ्री होता था वो भागता था शॉप में सर्व करने के लिए। फिर डैडी ने उसके बाद उन्होंने फिर एक टाउन सेंटर में, हम लोग डडली में रहते थे। अच्छा, राइट, डडली इन द वेस्ट मिडलैंड्स। फिर डैडी ने एक शॉपिंग सेंटर में, सिटी टाउन सेंटर में एक शॉप लिया, जो इट वाज लाइक अ पाउंड शॉप, वेरी बिग, और घर की हर चीज़ उसमें वो बेचते थे। तो उन्होंने फिर रिटायर होने तक वही किया था। Alright, okay. Alright, okay. And then obviously आप बड़ी हो गई, आपने स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी बाद में गई थी। अच्छा। पहले कॉलेज गई, तो फिर मैं मेडिसिन करना चाहती थी, ए लेवल्स किए। अच्छा। मगर फैमिली जो है वो कहते थे कि हमारे मुआशरे में बेटियों को घर से अकेले नहीं रह सकती घर के बाहर। तो फिर मेरी शादी हो गई, कोपेनहेगन में अरेंज वो किया फैमिली ने। तो हमारे पाकिस्तानी थे, तो ऑब्वियसली मैं मेडिसिन तो नहीं कर सकती थी कोपेनहेगन में, ए लेवल के एग्ज़ाम्स दे के तो मान चल गई। तो वहाँ पे फिर, क्योंकि मैं तो खामोशी से नहीं बैठ सकती हूँ, आई एम क्रिएटिव, आई एम एम्बिशियस, तो कंपेटिटिव। तो मैंने वहाँ डेनिश सीखा, डेनिश लैंग्वेज। मैं एक बात थोड़ी सी मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप 4 साल की उम्र में यहाँ आई हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज आपकी उर्दू, और मैंने आपके साथ पंजाबी भी बोली हुई है जी, और अंग्रेज़ी तो सियालकोटी हूँ, तो पंजाबी तो बोलनी नहीं, लेकिन आपने ये दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर इतना आपका माहिर, आई कुड नॉट टेल कि you've been here since the age of 4. I always thought कि 20-25 साल की उम्र में आई होंगी आप। Really? नहीं, honestly, and I think a lot of people would be quite surprised, क्योंकि आपकी जो उर्दू की लैंग्वेज है और जो पंजाबी आप बोलती हैं, it is so native in that sense. तो it's अच्छा, तो carrying on, you went to in Copenhagen, Denmark. And then you learned Dutch there. Learned Danish language. Okay. Because what else could I do there? I didn't know the language in the beginning. और जब मैं वहाँ गई थी तो मेरी आंटी के साथ वहाँ रहती थी, डॉक्टर सर्जरी में गई, तो उनके लिए मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो क्योंकि मेरा मेडिकल साइंसेस का बैकग्राउंड था, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसने कहा कि कैन यू वर्क फॉर मी एज एन इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटिंग डेनिश इनटू। नहीं जी, उस वक्त आई डिडंट, as soon as I went I didn't know Danish, translating from Urdu and Punjabi to English. Right, okay. So the doctor could understand English. तो मगर उसी ने मुझे मशवरा किया कि we are so short of translators, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल्स में, सर्जरीज में।
So that motivated me to learn the Danish language And you learned that in how long? in 1 year. Oh, wow. And you within speak 1 fluent year, Danish? I did then. अब तो बहुत साल हो गए. अब अगर कोई मिलते हैं लोग डेनिश बोलने वाले तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से वो कुछ याद आ जाता है. But then I learned Danish in the first year and मैंने interpreting का कोर्स भी किया. तो फिर मैं fully qualified translator and interpreter registered. For Danish and for Urdu and for English. Yes. I mean, that's acha, right, okay. So I see, you see, it's very important to paint a picture. I just want to see, Yes. you know, you've built this phenomenal empire, I suppose, in the business world. And I just want to try and gauge what is, you know, because you've done something very special. I want to find out what is special about you as well. Yeah. So obviously language is one of them. Language is one of languages them. are one of them. And the motivation to be successful. That I wanted to be the best in that field as well. So I became a qualified interpreter, registered with an agency, and I was just fully booked up all the time in hospitals and surgeries. All right, okay, so you were sort of in, you know, sort of Copenhagen doing translations and that sort of stuff. And then you came back to the UK after a little while? Yes, I had, mashallah, I had my 2 children in Copenhagen, were born there. Okay. My daughter Saleha and my son Saad. So unfortunately the marriage वो कामयाब नहीं हुई थी. तो मैं फिर बच्चों को लेके वापस आ गई. अच्छा, आप 4 साल के बाद. लंदन आई या डडली गई? डडली आई थी. माँ बाप सब बहन भाई वहीं थे. बच्चे छोटे छोटे थे तो मुझे जाहिर है कि सपोर्ट चाहिए थी. तो मैंने यहाँ वापस आकर फिर मुझे देखना था कि बच्चों के साथ अब मैं क्या करियर कर सकती हूँ. सो शुरू में मैंने कुछ जॉब्स किए, फिर ऐसा ऐसा इन अबाउट अ ईयर और सो मैंने सोशल वर्क में चली गई थी. अच्छा, राइट, ओके. इन सोशल वर्क. सो आई देन विद इन अ फ्यू इयर्स आई बिकेम अ क्वालिफाइड सोशल वर्कर. तो उस वक्त मैं फिर यूनिवर्सिटी गई थी वापस आकर. अच्छा, तो as a single parent, exactly, you came back, you did my master's in social work. Right, and you also started working, and then you're also a parent as well. Yes. So there's a quite a lot going on at that time. Yes, yes. And alhamdulillah, मेरे माँ बाप बहुत supportive थे, बहन भाई supportive थे. वो child minding and child care में उन्होंने बड़ा help किया. तो मैंने फिर मुझे sponsorship मिला from Northampton County Council they paid for my social work degree on the condition that I work for them for at least 2 years afterwards. तो मैंने child protection में specialize किया था. Right, okay. जी, Okay. जी. So social work is a very stressful area, especially जो child protection का है काम. उसमें social workers का burnout जो टाइम होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है. तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊं कि आई एम गेटिंग बर्न्ड आउट. Absolutely. So I wanted to, I knew that I have all these qualifications. I have a master's degree, I have these language skills, my personality, I'm a get up and goer, right? And I just felt the world was my oyster. So I looked for other things to do and I came across the will writing industry. Acha, how did you come across the will writing? Actually, that's the interest. I mean, because after social work, you went straight into wills. Yeah. Am I right in saying Yes, that? How yes. did that come about? That's the interesting part. I wanted to still work with people. I didn't want to be somewhere stuck in an office. I was offered a job in the Home Office, but that was just being You wanted sitting to help in people. one office. Help yes, people. I wanted to be, because I always wanted to give a service, right, where I'm helping people. That's one of the reasons why I went into social work. But social work became quite stressful. I enjoyed it, but there was when it's time to change. Yeah, exactly. I mean, Yes. you've done it for 10 years, and I think you've got to hang the gloves. Absolutely. And I felt it was the right time. And so one day I went in and resigned.
and we have to give 2 months notice, so I had time to look for something else. Acha, without finding anything, you just got up and said, right, I'm resigning? Ali, Did you have anything planned? No. Ali, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई. वाह. So अल्लाह ताला आप हमें पता होता है कि when the time is right. And also, you know, ये जो आपने बात की है कि you just went in and resigned without having anything in Lined the up. pipeline. I didn't, but I had self-belief. I had self-confidence. And self-confidence, self-belief, and the belief that Motivation. I am going to do something and Allah subhanahu wa ta'ala is going to Wasila look after me. bana deta. Absolutely. Yes, One door closes, yes. another 100 opens. 100 more open. Yeah. Ji. Self-belief it's like you know, what goes around comes around. If you have self-belief and you have integrity and you're doing right thing, not किसी का हक नहीं आप मार रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अच्छा ही करना चाहते हैं, अल्लाह वसीला बना देता है. तो इसी तरह मैंने एक दिन जाके मैंने रिज़ाइन कर दिया, and within a week or so I found my you know calling in life. Which was wills. Absolutely, will writing. So how did you step into that? I mean, like, you know, you can't say ek hafte baad mujhe will ka wo. How did you come about that? Did you meet somebody? I saw an advert in the newspaper and I applied for it. And it was for a job? Yes, I got a job. Okay, and then you as a legal consultant, where they had a basic salary, very small basic salary, but commission. So majority of the income would be commission. So I applied for it, they gave the basic training, and I started working. And within about 2 months, I became their top salesperson. I'd never done sales in my life before. That was new to me. But it was because of the social skills that I had acquired over the years, and through social work as well, the interpersonal skills that I'd learned during my social work life. I mean, that really helped. Of course it does. And I think people look for especially for will writing and everything else, and because you were a social worker, I think there's an element of compassion there as well anyway. It's automatically built into you. Well, the thing that... And you want to do something better for other people's families and other people's children. And that's why I went into social work, because I had that compassion already. That's right. And you know, when you've gone through a very difficult times yourself, I think you can relate to people and their problems. Yes, absolutely. Ji, bilkul. And the only way that we can help people, if we can relate to their problems and their issues, is by understanding their problems. By understanding them and discussing their issues and problems. Absolutely. And then finding a solution. Yes. So you came into the will world. And I did my qualification. And then you did your qualifications. Yes. And then so it was a natural growth. That's it. Abacus was a natural thing where you would then, you know, set up my own company. Somebody like yourself, I don't think is going to hold back. No. You're probably going to be thinking, right, okay, so I need to make this my own. I think that's the important thing. Okay, so you started this, and how many years ago did you start this? I started my company in 2003. Okay, so you've been going 21 years now. Yes. Mashallah. All right. Okay. Mashallah. 21 years is a very, very long time. Yeah. Okay. Just to explain to us Abacus. I mean, there's, you know, I was expecting Abbas hoga. Okay, Abacus. What's the thought behind that? Well, Abacus is a counting instrument. Okay. Yeah. और ये हजारों साल पहले ये जो like the Egyptians and so who are the biggest architectures and so on, they used to use this as a counting instrument. So जो बच्चों का भी है वो एक खिलौना होता है, it's on a stand with rods and beads. Yeah. That's an abacus. Okay. So basically calculating other people's finances, Absolutely. making a will for that. Yes. Okay, so that's the thought plan. All right, okay, that's interesting. Yeah. All right, Tehseen, thank you so much. इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर चलते हैं. नाजरीन, आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ मुलाकात होगी. शुक्रिया.